here, but I think I'll have to say something like data equals. Okay. And there are other options available in Seaborn, like bin range is given. KDE is something that I'll show you what it means. Okay. Let us give the data first of all and see the basic Seaborn plot. Okay. So you can see here that this is a much more detailed plot. Yeah. Then if I do something like KDE equals to true, then this will show me a kernel density estimation. Okay. So kernel density estimation मतलब वो एक curve दिखाएगा that is fitting to this distribution. Okay. By default KDE is false. See here, that is showing us a curve. Okay, that is fitting to our data. We can do the same thing for country. Okay. So curve दिखा रहा है लेकिन वापस से हमको labels change करने हैं. Okay. So now changing these things in Seaborn requires a little bit of more effort. Okay. Seaborn is based on matplotlib. So for Seaborn you need to say something like AX equals to AX. So there is an option here called AX. Right. So you can see here AX equals to none. That is the default value. Okay. Let me give something for color as well. Okay. I can say color equals to red, and I can say AX equals to AX, and I'll have to give something like PLT AX equals to. So let me show you. Okay. So I'll provide this. Okay, and I can give you a fixed size here. Okay, you can see that it automatically imported the fixed size from IPython and Pylab tools. Okay, this was easily done here. Previously for matplotlib we changed the figure size directly here, but for Seaborn we need to do a little more. Okay. I have given AX equals to AX here. Then I can do something like AX dot it's not showing the suggestion, so let me simply look it up. Okay. And then you can say rotation equals to 90. Now let us plot this. Okay, I'll have to provide text in this case.
Okay. Anyways, so this is what you would have to do. You also have to provide X ticks. Okay. यहाँ पे X ticks भी देने पड़ेंगे, which is nothing but manually providing what the values of the ticks are going to be. Okay. So here X ticks would be the unique names of the countries. Okay. In this particular order. This is a quite a complicated task. Okay. So let us not do this right now. Okay, so you can see that the color of the graph is also changed. Beside his plot, there is something also called a disk plot. Okay, in C1. So you can simply say x equals to df 4. Okay. So you can see the distribution plot as well. So this is a little different from our histogram. Okay. And a kernel density function is provided by default. The difference between histogram and distribution plot is that in the histogram on the y-axis you have the frequency counts, whereas in the distribution plot on the y-axis you have density. Okay, यहाँ पे density है, frequency count नहीं है. तो distribution plot में और histogram में ये फर्क है. एक में frequency count आएगा और दूसरे में density आएगा. Axis. Clear? Yes. Same thing for KD we can do here. KD equals to false कर सकते हैं. यहाँ पे by default KD equals to true है. Then let us take a look at box plots. Okay, box plot में भी same चीज आपको x देना पड़ेगा. So let us give first of all country. ओके, तो कंट्री के वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है. तो स्ट्रिंग वैल्यूज को बॉक्स प्लॉट में प्लॉट नहीं कर सकते. क्या होता है, हिस्टोग्राम में और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो खाली डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काउंट होता है, ठीक है. अदरवाइज दिस इज नॉट अ न्यूमेरिकल कॉलम, देयरफॉर वी कैन नॉट क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट. ओके, सो यहां पे स्कोर ही रखना पड़ेगा. Let me change the figure size. So you can easily guess कि ये जो है वो हमारा width है फिगर का और ये height है, ठीक है. तो इसमें रिवर्स कर देते हैं ताकि बॉक्स प्लॉट जो है हमारा थोड़ा अच्छा दिखे. Okay, that is too long. So बॉक्स प्लॉट में क्या होता है कि 4 क्वार्टाइल होते हैं. ओके, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल. क्वार्टाइल डिपेंड ऑन द मीडियन वैल्यू, ओके, ऑफ द कॉलम. तो आप क्लास में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जब पढ़ोगे, मीडियन मोड वाला वगैरह बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, तो उसके अंदर एक चीज आएगा, वो है क्वार्टाइल. ओके, अगर आपको लेक्चर में पढ़ाते नहीं है तो कोई बात नहीं. क्वार्टाइल इज नथिंग but based on the median value of the column, okay, the values of the first quartile, second quartile, third quartile and fourth quartile are decided. Okay, so it is median value plus some interval minus some interval. Okay, that will give you the quartile values. So in this box plot here, how to read a box plot? So this is the first quartile,
Okay, the bottom line. This is the fourth quartile, the top line. Okay, और ये जो उसके अंदर जो बॉक्स है, this is going to give us the first quartile, second quartile and the third quartile. Okay, और जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, that is our median value. Okay, so you can see the median value is somewhere around, I think 40 or somewhere. Okay, because the 45, because the range is starting from 40. यहाँ से 40 से start हो रहा है, I guess. हमने देखा था ना वो क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं कि 40 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, so it is around 45, I guess, ठीक है. And all of these black dots and black circles you see here, these are outlier values. Okay, so what do you mean by outlier values? The data which is far away from the Right, data which is far away from the all the other data, that is known as an outlier. Okay, an outlier detection and removal is sometimes very important in order to apply machine learning algorithms. ठीक है, क्योंकि कुछ आउटलायर्स ऐसे होंगे कि जो हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगे. Okay, मशीन लर्निंग में क्या है कि each example, okay, by example I mean row. Okay, each example of the data or each row of the data has some sort of impact on how the algorithm learns things. ठीक है, एक छोटे बच्चे जैसा ही काम करता है. उसको हर बार आप बोलोगे कि ओके द स्काई इज ब्लू, लुक द स्काई इज ब्लू, लुक द स्काई इज ब्लू. ओके, 10 बार उसको स्काई की तरफ पॉइंट करके बताओगे ओके दिस इज ब्लू. अचानक से एक दिन शाम को सनसेट के वक्त आप बोलोगे ओ द स्काई इज पिंक. Then that instance, okay, that example that you give, okay, there is, see this is pink, so that was one example out of 10, but it was so different from the other 9 examples that it has much more impact on what the child will learn. Okay, so that is the same thing for machine learning. If the machine learning algorithm is learning from similar examples, okay, examples that are much different than regular or average examples will have much more impact on what the machine learning algorithm learns. Okay, that is why outliers are important to detect. ठीक है, कार वाला डेटा सेट है, वो सभी कार की माइलेज लेटर से 10 से लेकर 30 तक जाती है, और अचानक से 2-3 कार ऐसी है जिनकी माइलेज 60-70. So obviously they are going to affect the calculations. Yes, larger values affect calculations more. X into 25 is going to be a small number, but X into 80 is going to be a very big number. Yes, the difference between X into 25 and X into 80 is how big? It's too much. And machine learning is nothing but calculations. Therefore, larger values have more impact. Therefore, did I talk about standardization and normalization in the lab last time? Okay. So this is going to be your next practical issue. Okay. So there is the concept of standardization and normalization. Okay. First of all, whenever you get data, pre-processing में क्या steps आते हैं? Data आपको मिलता है, सबसे पहले क्या करने का? Missing values लिखनी. Okay. You deal with missing values, either remove them or replace them. That is the first step. Second step, understand your data distribution. Okay, using box plots or histograms for each of the columns. You understand and you see what is the range of data, what is the average value, what is the median value, what are outlier values that could affect our calculations. Okay, once you see, okay, these are outlier values, should I remove these rows or not? Are they important for learning? Okay, taking the example of the child once again, I will not remove the instance of the example where I showed the size screen, because it is an important concept. The child needs to learn that. Okay, I will not remove that example from my list of examples. So it's up to you whether you want to remove the examples or not, which are outliers. Okay, but keep in mind that outliers do affect machine learning algorithms in a big way.
Okay, so that was the second step. Then the third step is either standardization or normalization. Okay, and it comes down to once again large values affect calculations much more than smaller values do. Okay, if you have 3 columns, once again the car data set. Okay, I love the car data set. If you have a column called mileage, the range of values would be going from around 5 to let us say 100. ठीक है, माइलेज का जो रेंज है वो 5 से 100 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, ऐसा सारे एग्जांपल्स में है. ठीक है, तो रेंज ऑफ वैल्यूज इज 5 to 100. Then there is something called number of tags. So it would go from 4 to 10 tags. So range of values is 4 to 10. Then you have horsepower. So range of values will go from Maruti 800 का 800 horsepower से लेकर के 5000 3000 है 5000. So you can see the difference in the range of values. One range is going from 5 to 100, another range is going from 800 to 5000. So which column do you think is more effective in calculation? Obviously the horsepower column will, it will overpower all the other columns in our calculation. Okay, so these are all factors impacting your predictions basically. Okay, so you should, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक फैक्टर है और ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे प्रेडिक्शन. हॉर्स पावर शुड नॉट इफेक्ट मच मोर देन माइलेज. Yes, that is why we do something called normalization and standardization. तो normalization और standardization में क्या करते हैं कि सारे कॉलम्स होते हैं उसकी रेंज जो है वो इक्वल. Okay, in normalization the range of all values goes from 0 to 1. In standardization I think it goes from -1 to 1. ठीक है, तो हॉर्स पावर भी 0 से 1 तक जाएगा, माइलेज भी 0 से 1. बट जो प्रेसिजन है वो सब कुछ बदल जाएगा. तो सारे वैल्यूज इसका फायदा क्या होगा, सारे वैल्यूज एक ही रेंज में है और सारे वैल्यूज छोटे छोटे. So it will not affect our calculations too much or differently, too differently. I hope you understand. So this is the third step in data pre-processing, standardization and okay. Right. Then after that there is a fourth step which is known as encoding. Okay. So this is also something that we will do in your practicals. तो encoding में क्या होता है कि सारे categorical variables को numerical variables में convert कर दिया जाता है. Okay. There are two ways to do this. One is one-hot encoding and another is label encoding. Okay. One-hot encoding में क्या होता है, पहले label encoding समझो, वो ज़्यादा easy है. Suppose करो कि कार के कलर का कॉलम है, कोई कार ब्लू है, कोई कार व्हाइट है, कोई ब्लैक है. So this is a categorical variable. You want to convert it into numerical variable so that it can be used in your calculation. Okay, you cannot multiply by blue, right? So what we will do? We will do label encoding. So label encoding में क्या होगा? Blue will represent, let us say 1. Okay, green will represent 2, red will represent 3, and so on. So you give each label a number. So there is label encoding. Okay, and it is a one-to-one relationship. Okay, blue के लिए दो अलग-अलग नंबर नहीं होंगे, एक ही नंबर. Clear? Then you have something called label encoding. Oh, sorry, one-hot encoding. One-hot encoding में क्या करता है कि कलर कॉलम जो है, you will replace this column, मतलब ये कॉलम को रिमूव कर दीजिए, and उसमें जितने वैल्यूज हैं, उन सभी के लिए एक-एक अलग-अलग कॉलम. मतलब क्या करोगे, कलर कॉलम जो है हमारे डेटा के अंदर उसको रिमूव कर दो, फिर ब्लू का एक कॉलम बनाओ, रेड का एक कॉलम बनाओ, ग्रीन का एक कॉलम बनाओ. फिर कलर वाले कॉलम के अंदर जहां जहां ब्लू आता था वहां पे ब्लू वाले कॉलम में बनाएगा, बाकी सभी जगह जीरो. तो अगर ब्लू 1 है तो बाकी के सारे कॉलम्स ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट वो रो में जीरो होंगे, क्योंकि ब्लू 1 that is why all the other color columns are 0. So this is known as one-hot encoding.
Okay, so these are the two ways in which you can convert your categorical columns into new columns. And this is the fourth step of data pre-processing. ठीक है, स्टार्टिंग के 2-3 प्रैक्टिकल्स है वो डेटा प्री-प्रोसेसिंग नहीं कर रहा और डेटा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा, मशीन लर्निंग तो कुछ कर ही नहीं है, ठीक है, वो तो बाद में आएगी. Understanding clear? Both label encoding and one-hot encoding have their advantages and disadvantages. Fine. One-hot encoding का disadvantage ये है कि your data will become sparse. Sparse बन जाएगा. Sparse कैसे बन जाएगा? कि suppose करो कि कलर में तो खाली 7 रेनबो कलर्स है, ठीक है, तो 7 कैटेगरी हुई, तो वन हॉट एनकोडिंग करोगे तो 7 अलग अलग कॉलम होंगे, ठीक है. लेकिन सपोज करो कि कलर के अंदर कोई नए मतलब वेरिएंट अजीबोगरीब लेके आए, जैसे कि शाइनी ब्लू, ऑफ वाइट, ऐसे ऐसे कलर लेके आए और 7 से ज़्यादा कलर हो गए, सपोज करो कि 255 कलर हो गए. ओके, तो क्या क्या करना पड़ेगा आपको? 255 कॉलम करना पड़ेगा, because there are 255 categories of colors. And in those 255 columns, अगर एक वैल्यू 1 है तो बाकी की 254 वैल्यू 0 है. Okay, so if you represent these columns, 255 columns, in the form of a matrix, okay, 255 cross, sorry, not the number of rows cross 255. Okay, number of rows 5,000, 10,000 to use. Okay, so let us say 10,000 cross 255 वाला मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में क्या होगा? पूरा 0 से भरा होगा. So this is such a matrix is known as a sparse matrix. Okay, so this is the disadvantage of one-hot encoding. Okay, if you have lower number of categories, use one-hot encoding. If you have higher number of categories, use label encoding. Clear? So let me, yeah, I was explaining the box plot. I digress, but okay. Anyways, so these are all the outlier values of the box plot. Yeah. This way you can know. आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप encoding करने के बाद आप box plot बनाओ, ठीक है, वो भी कर सकते हो if you want. Okay, finally let us take a look at scatter plot. So we will say plt.scatter, and scatter plot में दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है. So let us put one as country and the other as scope. Okay, let us swap this. Okay, so each dot here represents the combination of country and scope. Okay, and each dot is a row actually basically. So there are 2200 dots of row. Fine. अगर आपको ये बहुत ही क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो in that case you can create several scatter plots. और यहाँ पे क्या करोगे आप? स्टार्टिंग की 200 रोज डाली, ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्कैटर प्लॉट में बाकी की 200 डाली. ओके, तो इसमें खाली 200 वैल्यूज है, तो दिस a bit better. Okay, but you then in that case you need many more scatter plots, क्योंकि ये तो खाली कंट्री और कोर का रिलेशनशिप है, बाकी कितने कॉलम बन गए, तो हर एक पेयर ऑफ कॉलम्स के लिए एक स्कैटर प्लॉट बनाना पड़ेगा. ओके, एंड दैट इज समटाइम्स कॉल्ड अ पेयर प्लॉट. ओके, तो आई थिंक सी बॉन्ड में पेयर प्लॉट अवेलेबल है. सी बॉन्ड में है ना? सी बॉन्ड में
ओके, यहाँ पे हम सीधा सीधा डीएफ दे देंगे, ठीक है। This might take some time because हर एक क्या बोलते हैं, हर एक पेयर ऑफ कॉलम्स के लिए वो स्कैटर प्लॉट बना रहा है। Okay, you can see that for every pair of columns it has created a plot. Okay, and it might be too much to look at because there are too many columns. Yes. So in this case, even I am not sure what to do. Anyway, so instead of pair plot, you can create a separate scatter plot, but that is too much work. So usually क्या करते हैं ऐसे केस में कि पेयर प्लॉट नहीं बनाते, हम खाली ऐसे रिलेशनशिप्स के स्कैटर प्लॉट बनाते हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड हैं। ओके, so suppose we are interested in the relationship between score and country, and we are interested in the relationship between let us say score and quality of education, for example. ठीक है, तो दो स्कैटर प्लॉट बना के काम चल जाएगा। It depends on what we want to understand. Yes, so visualization should only be done for things that we want to understand. बाकी का फालतू का visualization। So this completes your second part of our practical. So first practical is over. Okay. बाकी के लैब में आप ये प्रैक्टिस करो। For your information, I have created actually a Udemy course for data visualization. खुद ने मैंने बनाया, 3 घंटे का कोर्स है। It is paid course, but if you want, I'll give you a free coupon for that. Okay. तो आप फ्री में एक्सेस कर सकोगे वो कोर्स को। ठीक है, आई थिंक ये सभी का लैब हो जाएगा ना ये हफ्ते में विजुअलाइजेशन का, तो मैं क्लासरूम में ही पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आपका पेडागोगी है ना, उसमें शायद एक ऑनलाइन कोर्स भी है, राइट? सो यू कैन चूज टू डू माय कोर्स। ठीक है, enough of self promotion, please start your practical.